हे गाइस, दिस इज DS Tech। लास्ट वीडियो में हमने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को समझा था एंड दिस वीडियो इज अबाउट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट अगर मैं इसे थ्योरेटिकली डिफाइन करूँ, व्हेन एन इफ एल्स स्टेटमेंट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर इफ और एल्स, then this is called nested if statement। means nested if में हम एक if को दूसरे if के अंदर लिख सकते हैं। सिंटेक्स को देखकर समझते हैं। अगर if कंडीशन ट्रू होती है तो जो if ब्लॉक के अंदर if है स्टेटमेंट उसमें जाएगी। अगर ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं तो फॉल्स हो जाएगी। बट अगर फर्स्ट इफ स्टेटमेंट जो स्टार्टिंग में है वही फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट पूरे ब्लॉक को स्किप करके बाहर आ जाएगी। आप फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं, ये थोड़ा इजी होगा। जनरली नेस्टेड इफ यूज़फुल है जब आप एक कंडीशन दूसरी कंडीशन के अंदर चेक करना चाहते हैं। अब हम सीधा इसकी कोडिंग पे आते हैं। आई थिंक आप उससे और अच्छे से नेस्टेड इफ को समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं कोडिंग को। हैशटैग इंक्लूड studio.h int main। आज हम प्रोग्राम बनाएंगे, तीन इंटीजर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने तीन इंटीजर ले लिए, num1 num2 num3। इसमें इन्हें हम कंपेयर करेंगे लेस देन एंड ग्रेटर देन को। स्केलर num3 num1 is greater than num2 and num1 and num3। ये हमारी हमने पहली कंडीशन लगाई है। printf is greater than num2 is greater than num3। num2 and num3 को भी आपस में कंपेयर करेंगे। smaller than else enter num2 num3 and num3 now to कंपैरिजन चल रहा है क्योंकि कॉपी कर लिया, पेस्ट, कंडीशंस चेंज कर देंगे। कंडीशन चेंज कर देंगे। num2 is greater than num1, num2 is greater than num1, num2 num1 3।
else if number is greater than number 2. अगर number 3 is greater than number 2 and number 3 is greater than number 1, तो हमारी 3 कंडीशंस बन गई हैं. कंपाइल करेंगे. Enter the 3 number 50, 90, 100. 100 is greater than 90 and 500 is greater than, so उसमें program एंगल लगा देते हैं जिससे हमारे जो स्लैश एन जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में अगेन 50, 40, 30. 50 is greater than 40 and 30, 40 is greater than 30 and 30 is greater than 40. इस तरीके से हम और भी केसेस बना सकते हैं. You can also try. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट. तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे.